इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ुଥିଲେ ना से आगु पळे आसनो एडी के सॉरी ओके सो लास्ट क्लास रे हम पढ़िथिले इमरजेंसी प्रोविजन जो तो नेशनल इमरजेंसी गोटे पढ़िथिले स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के नंबर आर्टिकल 300 तो नेशनल इमरजेंसी ला हमरो 352 ओ केस रे हम नेशनल इमरजेंसी लागू हुए वार हला एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन ओके ए नेशनल इमरजेंसी ये इश्यू करंती प्रेसिडेंट ओके कंडीशन कोन ता पे दरकार जे हमें कहिले तो कैबिनेट रो एटा हमरो रिटन अप्रूवल दरकार ओके रिटन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट ओके तापरे हमरो नेशनल इमरजेंसी लागू हला बेले you can extend the tenure of the Lok Sabha or Vidhan Sabha केते तमे tenure टा बढ़ाई परिबो वर्ष लखे at a time तमे बढ़ाई परिबो 1 year at a time तमे 1 year बढ़ाई परिबो केते थरा बढ़ाई परिबो जरा वर्ष बढ़ाइला 5 वर्ष अछि 6 वर्ष बढ़ाइला तापरे तो तमे केते थर भी बढ़ाई परिबो ओके किंतु वर्ष को गोटे थर गोटे थरे हमें कोन करिवा वर्ष गोटे थर तमे बढ़ाई परिबो 1 year at a time लखे तमे बढ़ाई परिबो नेक्स्ट होची तमरो आको अप्रूवल दरकार ना नहीं लोकसभा राज्यसभा रे जतबेले तमरो नेशनल इमरजेंसी लागू हबो वेदर अप्रूवल दरकार अछि ना दरकार अछि कोन दरकार अछि लोकसभा राज्यसभा रे ओ मेजॉरिटी टा पास हो दरकार स्पेशल मेजॉरिटी रे बोथ हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी बोथ हाउस रे ओके सो लोकसभा राज्यसभा रे स्पेशल मेजॉरिटी बोथ हाउस रे हमरा पास है अच्छा को रिमूवल करिया पे कोन कंडीशन रिमूवल प्रेसिडेंट केतेबेले भी हमर रिमूवल करि परिबे त जेबे हमर एई नेशनल इमरजेंसी बंद हबो विद इन 6 मंथ भितरे हमर तमे रिमूवल करबा हमर जदी आप राज्यसभा रे अप्रूवल दरकार नै रिमूवल पई हां दरकार नहीं ओके ताल कोन कंडीशन सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा रे जदी हेगला ओके तो सिंपल मेजॉरिटी रे लोकसभा रे जदी हेगला लोकसभा रे जदी पास हेगला ताले हेगला आउ कोन थिला हमरो ना जेतबे नेशनल इमरजेंसी लागू हबो हमरा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी हिजबो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी माने कोन ना टोटल पावर टा सेंटर हाथ रे हिजबो यूनिटरी स्टेट पाई भी के लॉ करिवो सेंट्रल लॉ करिवो तो फेडरल स्ट्रक्चर टा हमरो यूनिटरी हिजबो ओके नेशनल इमरजेंसी हमरा केथर लागू हेछि 3 टाइम्स ओके को बेले ना 1962 वार इंडिया चाइना ताबरे 71 75 सो हमारा नेशनल इमरजेंसी तो वार आउ ए नेशनल इमरजेंसी जो 1975 रे लागिथिला को कंडीशन रे लागिथिला
इंटरनल डिस्टर्बेंस तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हमें चेंज कले आर्म रिबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट 78 लेड बाय मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट ओके तो अग्रु इंटरनल डिस्टर्बेंस कंडीशन रे इंदिरा गांधी लगे देथिले ये कहले नहीं नहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस में तुमको आर्म रिबेलियन कंडीशन रे हमरो ओके तमरो नेशनल इमरजेंसी लागू हे करे ओके तले नेशनल इमरजेंसी आउ हमें पढ़िथिले 356 गुटे 356 कोन थिला स्टेट इमरजेंसी और आपको कौन कहती प्रेसिडेंट रूल बोली भी कहती ओके प्रेसिडेंट रूल बोली भी आपको ओके तो हमें देखिबा प्रेसिडेंट रूल रो टोटल ग्राउंड कोन को केस रे हमरा प्रेसिडेंट रूल लागू है so article 355 कोन कोची impose a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on accordance with the provision of the constitution माने प्रति स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करबा कथा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन माने कोन ना देयर शुड बी ए गवर्नमेंट गोटे स्टेट रे भी गोटे गवर्नमेंट रहबा कथा हेडेड बाय हमर चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रहिबे जने गवर्नर रहिबे ओके जने काउंसिलर मिनिस्टर जने रहिबो तो जदी चीफ मिनिस्टर नाहंती माने कोन ना दैट मींस नो पार्टी हैव द मेजॉरिटी कोनसी पार्टी रो मेजॉरिटी जदी विधानसभा रे नाही तो सही केस रे नो पार्टी इज इन ए पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो हमें कहबा जे कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन होगा जिस कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार हमें कहले जे गोटे स्टेट रे मेजॉरिटी पार्टी रूल्स माने जार मेजॉरिटी नंबर अछि हमें ओडिसा रे कहबा 147 रो मेजॉरिटी होची 74 टा सीट जदी का पकरे नाही ताले गवर्नमेंट फॉर्मेशन हेई परिबनी तो सही केस रे हमें कहबा हंग असेंबली हेई गला और देयर इज नो पार्टी इन ए पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट ए केस रे हमरा कोन हबो ना हमें कहबा कॉन्स्टिट्यूशन मेशनरी ब्रेकडाउन जदी गोटे गवर्नमेंट फॉर्मेशन हेई पारुनी संविधान अनुसार हमर से स्टेट रो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही होनी तो हमें कहबा जे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन मेशनरी ब्रेकडाउन तो ए जदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन हला तो सही केस रे सेंटर कोन करिवो ना चाहिबो स्टेट केमती फंक्शन चालू तो सेंटर कोन करिवो ना ता पाखरे पावर अछि थ्रो प्रेसिडेंट सी कोन करिवे ना स्टेट को कंट्रोल करिया को ट्राई करे तो जोटा को हमें कोन कहूचे प्रेसिडेंट रूल और हमें स्टेट इमरजेंसी बोली हमें कहूचे तो स्टेट इमरजेंसी केते बेले हमरो लागू हुए और प्रेसिडेंट रूल केते बेले लागू हुए ना फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी इन द स्टेट तो जदी कॉन्स्टिट्यूशनली मेशनरी ब्रेकडाउन होची दैट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट इन द स्टेट और देयर इज no chief minister no party has the majority to form the government in the state सही केस रे कहबा स्टेट रो एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी ब्रेकडाउन हला तो एई केस रे डायरेक्टली सेंटर प्रेसिडेंट का थ्रो रे एठी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करबा जोटा हम कहूचे प्रेसिडेंट रूल इट इज आल्सो known as state emergency also known as constitutional emergency कितने नंबर आर्टिकल ना अंडर आर्टिकल 356 ओके सो 356 रे हमर एटा लागू सो प्रेसिडेंट रूल जो हमर रहिला प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 अंडर टू ग्राउंड one mentioned in the article 356 itself another 365 356 रे हमें कोन कहले जे हमर जदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन माने देयर इज नो पार्टी इन द स्टेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट सो 356 जानलो जे प्रेसिडेंट इश्यू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ ही satisfied that the situation has arisen in which the government of a state cannot carry on accordance with the provision of the constitution notable president can act either on a report of the governor of the state otherwise to even without the governor of the state so प्रेसिडेंट जदी गवर्नर जदी ओडे रिपोर्ट देले नाही वर्तमान कोनोसी पार्टी
हमर गवर्नमेंट परमिशन करि परना फॉर एग्जांपल तमे जानि छ मझिरे महाराष्ट्र रे हमर लागू होइतिला प्रेसिडेंट तो सेतिरे कोन हला ना जते बेले किछि पार्टी मेंबर बेले रिजाइन कले सेते बेले मेजॉरिटी कमी गला अपोजिशन कर तो से माने गवर्नमेंट परमिशन करि पारलेनी तो हंग असेंबली सेठी हमर कोन हला ना प्रेसिडेंट कर्नाटक रे हमर 15 रु 20 जन जते बेले कांग्रेस रो एमएलए हमर कोन कले रिजाइन कले तो सेते बेले तांकर मेजॉरिटी कमी गला कांग्रेस रो तो सेति पई सेठी भी हंग असेंबली आ प्रेसिडेंट रूल लागला मध्य प्रदेश रे भी सिमिलरली हमर हंग असेंबली लागला तो ए जो हमें कहू जे तो जते बेले हमर देयर इज नो पार्टी इन द स्टेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट अच्छा ओडिसा रे केबे हमर नेशनल इमरजेंसी ए जो स्टेट इमरजेंसी लागू होई छै परीक्षा रे ओपीएससी पड़े माने केबे हिस्ट्री हमर ओडिसा रे लागू होई छै कौन तुम्हारा आंसर रहियो more than 5 times more than 5 number of times अधिक 5 रु अधिक एग्जैक्ट नंबर मु जाननी किंतु more than 5 times हम ओडिसा रे स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लागू होई छै ओके तो आर्टिकल 365 कौन कहूची तो हमरा ए जो प्रेसिडेंट रूल जो लागू हुए तो हमरा गवर्नर का चैप्टर में पढ़ी थिले जे गवर्नर जते बेले स्टेट इमरजेंसी लागू हुए तो ही कैन रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट की वर्तमान सिचुएशन स्टेट रे कोनोसी पार्टी परमिशन गवर्नमेंट परमिशन करि पर नहंती तो सीए गोटे रिपोर्ट हमर प्रेसिडेंट को देबे तो से रिपोर्ट अनुसार प्रेसिडेंट हमर जो स्टेट इमरजेंसी लागू करिवे अदरवाइज प्रेसिडेंट निजे निजे हमर कोन करि परिबे ना हमर स्टेट इमरजेंसी लगे परिबे सो आर्टिकल 365 रे कोन होची ना whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center so it will be lawful for the president to hold the situation that are arising in which government of the state cannot carry out accordance with the provision of the constitution suppose national emergency हमरा लागू होइछ national emergency रे तमरा सेंटर कंट्रोल करछि सपोज सेंटर हमरा कोन करछि ना जहां भी डायरेक्शन दोछि कि और सेंटर किछि ओटे डायरेक्शन देला सेटा स्टेट मोनोपोली करछि तो सेही केस रे भी हमरा कोन होछि ना प्रेसिडेंट ना जो हमरा स्टेट इमरजेंसी लागू माने कहिबा कथा होछि जहां भी हमरा सपोज ओटे लॉ होछि यूनियन लिस्ट सपोज सेटा हमरा थ्रू आउट इंडिया रे सेटा इंप्लाई करा जाउछि सपोज स्टेट सेटा को मानुनी तो सेही केस रे सेंटर कोन करिवो ना जो डायरेक्शन ने सेंटर इंस्ट्रक्शन दउची तो जदी सेटा स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और सेटा को मानुनी ताहले कोन करा जिवो ना सेही केस रे भी हमरा प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी हमरा लागू कर तामे देखिबा जे आर अप्रूवल कोडी दरकार नै हमें तो स्टेट इमरजेंसी लागू कर देले वेदर इट इज रिक्वायर्ड एनी अप्रूवल और नॉट सो जते बेले हमरो स्टेट प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुए must be approved by both house of the parliament within 2 months from the date of issue जेबे हमरो नेशनल जो स्टेट इमरजेंसी लागू हला 2 मास भीतरे सेटा हमर कोन होछि ना पार्लियामेंट रे पास होवा दरकार and president rule issued at the time when Lok Sabha suppose dissolved he is okay and dissolution of the Lok Sabha take place during 2 months without approving the proclamation एई केस रे हम जेमि लास्ट टाइम कहिथिल त नेशनल इमरजेंसी त लागू होछि एबे सपोज नेशनल इमरजेंसी लागू ओके काली रिजल्ट बाहरिबो ओके
गवर्नमेंट बर्तमान ऑलरेडी डिसॉल्व पोजीशन रे नेशनल इमरजेंसी लागू हैला लोकसभा सेशन ने नाही ताहले कोन करा जिवो वार हैला आज राति रे इंडिया चाइना रो वार तो सेही सिचुएशन ने राज्यसभा कोन करियो यदि अप्रूवल कर देला हे जिवो किंतु जो हमर सपोज 10 तारिख रे की और 9 तारिख रे जहां भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होची सेंटर रे तो से जेबे फॉर्मेशन हो विद इन 1 मंथ भीतर सेटा हमर अप्रूवल होबा दरकार ओके सो जदि एटा हमर लोकसभा डिसॉल्व हे जाईची ताहाले राज्यसभा जदि पास कर दोची आउ जतबे नुवा लोकसभा आसुची then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha तो लोक सभा नुआ गठन है कि तार फर्स्ट मीटिंग परे 30 डेज भीतर एटा निहाती पास होबा दरकार ओके प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव इट्स इन द मेन टाइम तो राज्यसभा जदि अप्रूव करूची एंड लोकसभा तयारी हला परे जदि हमरो 30 डेज भीतर अप्रूव कर दोची हे so if approved by both house of the parliament president rule continue for 6 months so it can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of the parliament every 6 months तमे जेमति कहले नेशनल इमरजेंसी हमर प्रति गोटे थरा हमर माने अप्रूवल हेले 1 ईयर तापर पुनी हमें रिन्यू करि परिबा एठी कोन ना 6 मंथ रे तमे रिन्यू करिवो एंड तमे मैक्सिमम 3 इयर्स रे तमे चले परिबो however if the dissolution of the Lok Sabha take place during the period of the 6 months without approving further continuation of the president rule then एटा हमर कोन होछि ना जेबे लोकसभा तयारी हबो 30 डेज भीतर हमर एटा पास सो एटा हमर हां आउ कोन होछि ना एवरी रेजोल्यूशन जोटा कि हमर ए स्टेट इमरजेंसी आसुछि approving the proclamation of the president rule or a continuation can be passed by either house of the parliament only by a simple majority that is majority of the member of that house present and voting किंतु स्टेट इमरजेंसी बेले देखो हमर कोन होछि सिंपल मेजॉरिटी दरकार बोथ हाउस रे लोकसभा और राज्यसभा रे सिंपल मेजॉरिटी यदि पास हे गला त ताहले हमर ओके आउ जदि रिवोक करिवार अछि जदि प्रेसिडेंट रूल को जदि रिमूव करिवार अछि एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट रिवोक करि परिबा एट एनी टाइम सब्सिक्वेंटली प्रोक्लेमेशन सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर एनी जदि प्रेसिडेंट जतेबेले चाहेबे एटा को रिवोक करि तो ता पई देखो सेठी हमर कोन होतला प्रेसिडेंट रिवोक करूतला एंड लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी पास होतला एठी किछि दरकार नै खाली प्रेसिडेंट जतेबेले चाहेबे तो रिवोक करि परिबे ओके तो वर्तमान हमें देखिबा कोन हमें कहिले प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हमर आर्टिकल 356 रे हमर अछि जेतले कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन होछि दैट मींस नो पार्टी इन द स्टेट हैज द मेजॉरिटी टू कंटिन्यू एज ए गवर्नमेंट तो सेही केस रे हमर स्टेट इमरजेंसी लागू है और स्टेट इमरजेंसी लागू हेले हमर बोथ हाउस रे सिंपल मेजॉरिटी रे हमर पास हो दरकार जदि रिवोक करिवार अछि प्रेसिडेंट हमरो एनी टाइम रिवोक करि परिबे तार कॉन्सिक्वेंस कोन हमें देखिबा ओके जदि प्रेसिडेंट रूल लागू हैला तो प्रेसिडेंट पूरा टोटल कंट्रोल तो सपोज हमें कहबा तो ओडिसा रे हमरो प्रेसिडेंट रूल लागू हैला ताले विधानसभा रहिबो ना भांगी जिवो टोटल हमें कहले प्रेसिडेंट हमरो कंट्रोल करिवे आ पई लॉ किए करिवो सेंटर करिवो पार्लियामेंट तो हमरो विधानसभा रहिबो ना भांगी जदि विधानसभा किछि करूनी ता पई स्टेट पई लॉ किए करले हमें कहले सेंटर करिवो तो विधानसभा र किछि काम नै ता रहिबो ना भांगी जिवो विधानसभा ऑलरेडी सेटा सेतोले नाही कारण तार स्टेट इमरजेंसी लागू हबो केतोले ना तांकर गवर्नमेंट नाही अच्छा त नेशनल इमरजेंसी लागू होइছে सपोज ओटे स्टेट नेशनल इमरजेंसी सेतले विधानसभा थिबो ना नथिबो सेतबेले थिबो ओके तो एई केस रे हमर जेतले प्रेसिडेंट रूल लागू होची he can take up the function of the state government and power vested by the governor or any other executive authority in the state तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल जेतबेले लागू हुए
तो स्टेट गवर्नमेंट रा फंक्शन आ पावर टा काहा को दिया है जाए ना गवर्नर को दिया है कारण गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर हमें कहितले जे गवर्नर को अपॉइंटमेंट किए देथांते प्रेसिडेंट देथांते ही एक्ट एज एजेंट ऑफ द सेंटर तो डायरेक्टली थ्रू गवर्नर हाउस तो सेंटर कौन करे ना कंट्रोल करे स्टेट पे so he can declare that the power of the state legislature are to be exercised by the parliament तो पार्लियामेंट डायरेक्टली हमर कोन करिवो ना स्टेट ऊपर लॉ जेहेतु हमर स्टेट लेजिस्लेचर नाही नो पार्टी हैज द मेजॉरिटी गवर्नमेंट भांगी जाईची तो सेही केस रे स्टेट रे कोन सी लॉ जदी आनिबे को पड़िबो तो डायरेक्टली हमर कोन करिवो ना पार्लियामेंट आ पई लॉ करिवो so he can take all other necessary steps including suspension of the constitutional provision relating to any body and authority of the state so सेति भाई हमें कहू जे ना जत्ते बेले हमरा प्रेसिडेंट रूल लागू होची गोटे स्टेट रे ओके द प्रेसिडेंट dismisses the state council of minister headed by chief minister तो जत्ते बेले हमरा प्रेसिडेंट रूल लागू होची दैट मींस सेठी हमरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाही चीफ मिनिस्टर नाहांती काहे कि ना ताकर तो ऑलरेडी भांगी जाईची तो सेही दि पाई तो हमरा स्टेट इमरजेंसी आसिला तो एठी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर नथिबे तो द स्टेट गवर्नर सेही पाई जे गवर्नर थिबे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरी on the state administration with help of the chief secretary of the state or advisor appointed by the president तो सही केस रे केमिति चलिबो यदि मिनिस्टर के ही नाहंती चीफ मिनिस्टर नाहंती काउंसिल मिनिस्टर नाहंती कैबिनेट मिनिस्टर नाहंती तो केमिति फंक्शन चलिबो ना हमर टोटल आईएएस ऑफिसर माने आ गवर्नर आ चीफ सेक्रेटरी आ जो आईएएस ऑफिसर माने एडमिनिस्ट्रेशन को चल हमु कोन लागु छी मिनिस्टर माने देश चलाउ छथि ओके तो मेजर मिनिस्टर माने दे आर द फेस ला फाइनली सेटा को माने डिसीजन फाइनल अथॉरिटी बट बिहाइंड टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करू छथि सिविल सर्वेंट टोटल तमरो ईच डिपार्टमेंट रे जने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अछि हमें बे ओएस हबो तो ओएस ले तमरो सपोज तमे कोन करिवो ना स्पेशल सेक्रेटरी ओके स्पेशल सेक्रेटरी हो छ किंतु तमरो ओएस रो ऊपर जे आईएएस रहउ छ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो छ माने एजुकेशन डिपार्टमेंट रे जने हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर जने रहउ छ जे कि टोटल ओडिसा रा एजुकेशन को देखु छ सिमिलरली हमरा पंचायत राज हला अर्बन डेवलपमेंट हला तमरा टोटल जेमदी कि हमें कहबा होम डिपार्टमेंट हला तो सबुथिरा जण जणे हमरा कोन रहउ छथि सेक्रेटरी जण जणे रहउ छथि हेड तो तांको तळे सब ओएस माने रहउ छथि जे माने कि स्पेशल सेक्रेटरी रहउ छथि तो से माने टोटल डिसीजन मेकिंग रे ए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा टोटल हेल्प करछ ओके एंड से माने को ऊपर हमरा जो हमें कहले एग्जीक्यूटिव जो माने रहिले मिनिस्टर जणे जणे हमरा रहउ छथि ओके तेणु मन रख ना जिते बड़े स्टेट इमरजेंसी लागू होची सेते बेले हमर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर टोटल गवर्नर आउ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट रे with help of chief secretary and other IAS officer मान का थ्रू रे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना so this is the reason why proclamation of state emergency under article 356 is popularly known as president rule काहे कि ना प्रेसिडेंट टोटल कंट्रोल करछंती बोली हमें कहउछे प्रेसिडेंट रूल the president either suspend or dissolve the state legislative assembly the parliament pass the state legislative bill and the state budget तो सेते बेले धरा बजेट हमर करिवो तो से बजेट को किए करिवो ना हमरा स्टेट करिवो ओके जेहेतु स्टेट कंट्रोल करूची so when the state legislature does suspended or dissolved जदी हमरा तमे भाबो विधानसभा नाही ताहले कोन हबो ना तो पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट to the president or any other authority तो total parliament हमरा लॉ करिवो स्टेट ऊपर parliament
or in case of delegation, president or any other specific authority make law conferring the power imposing the duty. President can authorize, when the Lok Sabha is not in session, the expenditure from the state consolidated fund pending its sanction by the parliament. Okay, even if हमर कोन होची ऑर्डिनेंस इश्यू हमर करि परिबो, particularly president को जहा पावर अछि धर ओडे हमें कहले जे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट केतना नंबर आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस हमरा प्रेसिडेंट आर्टिकल 1 2 3 रे केते बेले हमें कहले ऑर्डिनेंस इश्यू करिवे ना जते बेले पार्लियामेंट नॉट इन सेशन लोकसभा हो राज्यसभा हो और बोथ जदि से माने सेशन ने नाहांती तो सेही केस रे हमर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस आनंती अंडर आर्टिकल 1 2 3 रे किंतु सेही ऑर्डिनेंस का हमर 6 वीक जेबे हमर रीअसेंबल हबो 6 वीक भीतर सेटा हमर पास हबा दरकार तो एठी भी सेमती कारण हमर स्टेट रो ऊपर किछि भी लॉ करिवार अछि किछि भी हमर सैंक्शन जदि आनिबार अछि तो एटा हमर पार्लियामेंट रे पास हबार अछि जदि लोकसभा नाही तो सेही केस रे ऑर्डिनेंस थ्रू रे हमर प्रेसिडेंट स्टेट ऊपर गोटे लॉ आनि परिबे इवन इफ हमर जो तार बजेट पाई हो जदि जहां भी पैसा दरकार हमर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उ जाय तो एटा हमर पार्लियामेंट रे अप्रूवल विधानसभा नहीं माने पार्लियामेंट रे अप्रूवल जदि पार्लियामेंट जदि सेशन है नहीं तो प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन the expenditure from the state consolidated fund रे हमरा हम कहला जानि पहले आ से कोन कहला बड़ बेटे को डेलीगेशन माने तांकर टीम सी करिवे नले तांकर गोटे टीम हमर जो थाए ना हामी कहले जे गवर्नर किबा हमर सब चीफ सेक्रेटरी रहिले अदर जो आईएएस अफसर माने रहिले तांकर थ्रू रे हमरा कर ओके तो आमे जदि देखिबा ए दीटा अगर जदि कंपेयर करिबा स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी तो स्टेट इमरजेंसी हमरा कहले 356 नेशनल इमरजेंसी ला 352 ओके तो एडा केते बेले हुए ना जते बेले सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज इन थ्रेट माने वार हला एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन एडा केते बेले हुए हमें कहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेसनरी जेते ब्रेकडाउन ओके एनी रीजन हमर कोन होची ना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट कैरी इट आउट ओके तो सेथि पय जदि हमर कोनसी कारण रो हमर एठी गवर्नमेंट हेई पारो तो जते बेले हमर नेशनल इमरजेंसी लागू होबो तो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन एक्सरसाइज ऑफ द पावर असाइन्ड टू देम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज effect that the center get concurrent power of the administration and legislation तो जेतेबेले हमें कहिले नेशनल इमरजेंसी लागू हबो तो सेतेबेले स्टेट ऊपर भी हमर कोन करि परिबो सेंटर लॉ तयारी करि परिबो जोटा कि हम कहले फेडरल टा यूनिटरी हेजबो तो एठी जेतेबेले हमर स्टेट इमरजेंसी लागू होउची सेतेबेले स्टेट लेजिस्लेचर तो डिजॉल्व हो जाइतिबो सस्पेंड हो जाइतिबो तो सेही केस रे स्टेट रो कोनोसी मिनिस्टर नाहंती ओके तो हमर कोन हबो ना टोटल पार्लियामेंट लॉ तयारी करि ओके स्टेट पाई तो सेम जिनस हमरे कहला जे पार्लियामेंट कोन करूची ना स्टेट लिस्ट रे हमरो लॉ करि परिबो नेशनल इमरजेंसी रे एठी द पूरा टोटल पार्लियामेंट थ्रो गवर्नर आउ अलग तांकर जो ऑफिसर माने रहिले तांका थ्रो रे हमरो एडमिनिस्ट्रेशन आउ पार्लियामेंट तयारी तो आर मैक्सिमम पीरियड किछि नाही जे हमें कहले जे 1 ईयर तक करो केते थरा भी हमर कोन होची 1 ईयर एट ए टाइम थरे दि थर तीन थर चार थर करि परिबे ओके देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाइड फॉर इट्स ऑपरेशन इट कैन बी कंटिन्यू इंडेफिनेटली विथ अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ रे तमे जदी आ गोटे वर्ष पढे देलो ओके तो एडा अप्रूवल हमर दरकार तार मैक्सिमम पीरियड हमर केते कहितले 3 वर्ष हमर रहउची मैक्सिमम स्टेट इमरजेंसी 3 वर्ष आउ प्रति 6 मास लाखे तमे नॉर्मल सिचुएशन में बढ़ई परिबो 6 मास करके 3 वर्ष तमे बढ़ई परिबो सर लेफ्ट साइड स्क्रीन ता टिके देखा जाउनी भलो रे
एक्चुअली टिके कैमरा पोजीशन सर, कैमरा पोजीशन चेंज कर दो। कैमरा पर के लेफ्ट को खाली कर दो। कैमरा पोजीशन के चेंज है जी कैमरे गोटे मिनट आई थिंक एबे देखा गला क्या सर? सर देखला स्टेट इमरजेंसी तो लागू होची आमी कहिथिले फंडामेंटल राइट गुडा सस्पेंडेड हुए सॉरी नेशनल इमरजेंसी तो लागू होची फंडामेंटल राइट गुडा सस्पेंड हुए एक्सेप्ट दीटा फंडामेंटल राइट 20 आ 21 को छाडी देले अदर फंडामेंटल राइट गुडा को सस्पेंड हे जाय किंतु जेतेबेले स्टेट इमरजेंसी लागू होची कोनसी फंडामेंटल राइट तमरो सस्पेंड होय ना ओके तो एठी कोनसी फंडामेंटल राइट तमरो सस्पेंड हुए नहीं आ तमे जानि छ नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करिया को हेले लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी पास हो दरकार एठी हमरो खाली प्रेसिडेंट जदी रिमूव कर देले रिमूव कर दे नो अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट दरकार नहीं लोकसभा हो राज्यसभा ओके तो एडा हमर हला कोन ना तो केते थरा हमर जो स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लागू होची सिंस 1950 मोर देन 100 टाइम्स हमर प्रेसिडेंट रूल लागू होची तो वर्ष को कहया कोले एवरेज 2 टाइम्स ए ईयर हमर लागू होची Okay, so on a number of occasions, President rule has been imposed on an arbitrary manner for political or personal reason. तो केते गुडे केस रे भी हमरो ना कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी ब्रेकडाउन होची हमरो गवर्नर हमें कोन करिचे लेखि के देई देई छथि आ सेठी प्रेसिडेंट रूल लागू होची हेंस आर्टिकल 350C become one of the most controversial and most criticized provision of the constitution तमे जानी सुनी की गोटे गवर्नमेंट को भांगी की ताठू पावर नै कि जदी सेंटर कंट्रोल करिबा को ट्राई करिवो त हमें कोन करिबा ना हमें कहिबा जे एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार एटा गोटे ठीक नहे तो सेति भाई एटा को हमर क्रिटिसाइज भी करा जाउची और जानी सुनी की तमे कोन करिवो ना अपोजिशन पार्टी रो केते जन लोकन को नै आसीबो गवर्नमेंट हेटी गोटे स्टेबल गवर्नमेंट थिला भांगी की तमे एटी गोटे प्रेसिडेंट रूल क्रिएट करी कि तमर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करछ जेमति कि हमें कहले कर्नाटक हला मध्य प्रदेश हला और महाराष्ट्र हला तो सेइडा हमर कोन होछि ना पॉलिटिकल रीजन पई एठी हमर कोन होछि ना हमर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करा जाउछि तो एटा फर्स्ट टाइम हमर पंजाब रे 1951 रे हमर लागू होइतले नेशनल इमरजेंसी किंतु वर्तमान देखिया को ले प्रति स्टेट डेफिनेटली हमर कोन होछि ना ना हमर ई स्टेट इमरजेंसी रे जाय छै जेतेबेले हमर द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन लोकसभा 1977 आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी जो हमें कहले इंदिरा गांधी के समय द रूलिंग कांग्रेस पार्टी लॉस्ट जनता गवर्नमेंट केम टू पावर द न्यू गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई आसिले इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन 9 स्टेट्स जोठी कांग्रेस थिला तो से कांग्रेस गवर्नमेंट को भांगीबा पई 9टा स्टेट रे हमरो स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लागू करा so on the ground that the assembly in those states no longer represent the wish of the electorate when the congress returned to power it did the same the 9 state रे हमरो जो जनता गवर्नमेंट रो थिला तांको प्रेसिडेंट रूल लगे कि निज पावर को नहीं से कहले जे 1977 जेतबेले इलेक्शन हला बहुत गुडे स्टेट जेतबेले एमान को वोट मिला ये कहले तो लोक माने हमहु तो सपोर्ट करछन तनु ए स्टेट रो भी व्यू हमरो सेंटर तरफ रे तो सेति पई कोन होछि ना एठी इलीगली माने कोन करले ना 9टा स्टेट रे गवर्नमेंट कांग्रेस रो गवर्नमेंट थिला सेठी हमरो प्रेसिडेंट रूल लागू कले तो तले पुनी इंदिरा गांधी हमरा आसी गले 1980 बेल को तापरे सिमिलरली एठी कोन हला
ना आउ थे से 9टा स्टेट रे तांकर गवर्नमेंट को भागी के प्रेसिडेंट रूल लगे कि निजे को पाख को नहीं आसे सो प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड in 3 BJP rule state in Madhya Pradesh, Himachal, Rajasthan by Congress party. On the ground, they are not implemented sincerely. The ban imposed by Center on Religious Organization. देखो यही केस रे एटा इलीगल ना नहीं हमें कहले को केस रे संविधान लिखा है तमे प्रेसिडेंट रूल लागू करिवो ना केवल तमरा जो केस रे कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन हैला जदी गोटे पार्टी टे मेजॉरिटी लॉस कर देला कोनोसी पार्टी हमर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करा जाउनी करि पारुनी सेही केस रे तो एही केस रे कोन करा गला ना इलीगल माने कहले हमें जो डायरेक्शन देलु रिलीजियस हमर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर हमर बैन करा जाउची तो सेगुडा कर जतले माने मानिलेनी तो एठी हमर इंपोजिशन लगे देले तो सेथि भाई हमर कोन करा गला एही भले जेमति हमें कहले से माने जी जते बेले पाला जो नेशनल इमरजेंसी लगे दिला तो ता पई एसआर बोमाई केस रे आसीबा सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of this proclamation on the ground that secularism is a basic feature of the Indian constitution and the court did not uphold the validity of imposition of the president rule in Nagaland, Karnataka and Meghalaya and एबे कौन होची ना तमर धर प्रेसिडेंट रूल तमे लगौछ तो दैट शुड बी वैलिडेटेड बाय तमर सुप्रीम कोर्ट एबे चेक करूची वेदर तमे जो मन इच्छा जदी तमे प्रेसिडेंट रूल लगेइबो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन हेछि ना सेटा को से वैलिड करिवो वैलिड करी की तापरे ता ऊपर भी एक्शन हमरो नै परिवो तो बी आर अंबेडकर कहउतले जे हमरो ई भला सिचुएशन कोन पे अछि एबला सिचुएशन अछि जे ना जदी गोटे गवर्नमेंट भांगी जाउची इमीडिएटली ताको केमिति कंट्रोल करा जिवो सेथि पई हमरो एई प्रेसिडेंट रूल लागू अछि एज ए डेड लेटर तो सेथि पई एटा कोला आर्टिकल 356 would remain as a dead letter एटा गोटे हमें कहिले जेटा गोटे प्रॉब्लम जदी हैला हमें एमति करबा किंतु सेईटा को वर्तमान हमें कोन करछे गोटे डेडली वेपन हिसाब रे यूज करछे इंटेंशनली जानी गोटे गवर्नमेंट भांगी कि सेठी प्रेसिडेंट पावर हमरो लगा जाउ ओके सो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ए जुडिशियल रिव्यू हमर कोन करा गला ना सुप्रीम कोर्ट कहिले जे प्रेसिडेंट जो रूल लागू होची सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एटा मन रखिबो जे जदी मन इच्छा जदी सेंटर हमर गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लागू होची तो सुप्रीम कोर्ट किछ हस्तक्षेप करि परिबो कि यस तो सुप्रीम कोर्ट कोन कहला जे अंडर जदी आर्टिकल 356 रे प्रेसिडेंट रूल लागू होईची सुप्रीम कोर्ट चेक करियो वेदर एटा करेक्ट और रॉन्ग तमे ठीक रे रियली जदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन होईची त ताले तमे प्रेसिडेंट रूल लागू करि परिबो किंतु अदर केस रे जदी तमे कोन करूचो ना मन इच्छा लगेइचो ताले सुप्रीम कोर्ट सेटा को ता अगेंस्ट एक्शन नै परिबो सो सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ए रिलेवेंट मटेरियल तो तमे प्रेसिडेंट कहला धर कहबे जे नाही ए सिचुएशन मते लागिला कि एठी इमरजेंसी लागू होबा दरकार सेमिति नै कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जहां लिखा है जे कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी यदि ब्रेकडाउन होउची सेटा तो तम सैटिस्फैक्शन अनुसार तम मन इच्छा लगै परिबनी तो एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इफ it is based on the irrelevant extraneous ground or it found malafide intention is तम लगै जदी प्रेसिडेंट प्रॉपर जस्टिफिकेशन सह लगे नाहंती निजे इंटेंशनली सेटा को लगे छंती तो सुप्रीम कोर्ट सेटा कोन करिवो ऑन करि परिवो स्ट्राइक डाउन करि परिवो तेनु तमरा प्रेसिडेंट रूल जोठी लागू होची तो सेई जो प्रेसिडेंट रूल जो आगु हमें कहउथले मन इच्छा लागू होतला हम मन इच्छा लागू करि परिवो नै ओनली ग्राउंड होची जदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ब्रेकडाउन होला कोनोसी पार्टी जदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करि परनांती हंग असेंबली अछि तो सेही केस रे तमे लगै परिवो एंड जदी मन इच्छा लगैछ ताले सुप्रीम कोर्ट सेटा को चेक करिवो चेक करी के देखिबो जदी एटा गोटे मालाफाइड इंटेंशन ने हेछि ताहले सेटा को स्ट्रक डाउन करि तेनु प्रेसिडेंट रूल लागुची
तो सेही केस रे सेंटर टू प्रूव द जस्टिफाई करिवो जे नहीं जो प्रेसिडेंट रूल लागु जेटा ठीक रे लागु the court cannot go into correctness of the material or its adequacy but can see whether the it is relevant to the action or not. If the court hold the presidential proclamation to be unconstitutional or invalid, it has the power to restore the dismissed state government and revive the state legislative asset if it is suspended. बुझी परला ना जल्दी से चेक करिवो ना एडा माने इंटेंशनली मालाफाइड इंटेंशन रे करा जेछि आर किछि रिलेवेंट प्रूफ नाही और जो ग्राउंड रे माने लगेछन तार किछि इनवैलिड ग्राउंड ताहले सेटा को स्ट्रक डाउन करिवो एंड जो गवर्नमेंट को भांगी देथिले से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिवाइव करा जिवो आउ थरे रिस्टोर करा जिवो गवर्नमेंट को तार पावर फेरे दिया ओके द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड डिसॉल्व ओनली आफ्टर parliament has approved the presidential proclamation. Until such approval is given, the president can only suspend the assembly in case of the parliament fail to approve the proclamation. Okay. The co-case रे based on the report of the Sarkaria Commission, Center State Relations, Supreme Court in SR Bomai case, तो को सिचुएशन ने तमरो प्रेसिडेंट रूल लागू हे परिबो सेटा हमर एठी मेंशन अछि केतबेले ना आफ्टर द जनरल असेंबली जदी हंग असेंबली हे ओके हंग असेंबली हे गेला तो हमरो सपोज एबे बीजेपी नेई कहउछि 60 रु 70 कांग्रेस जो हमरो बीजेडी भी नेई कहउछि 60 रु 70 और कांग्रेस हमरो 15 रु 20 सपोज नेई कहउछि हमरो मेजॉरिटी मार्क केते 74 ओडिसा रे तो इट इज ए हंग असेंबली को भी पार्टी रो मेजॉरिटी ना 75 टा तो जतबेले हमरा नो पार्टी हैज द मेजॉरिटी नो पार्टी सिक्योर द मेजॉरिटी जेतला हमें कहउछ हंग असेंबली सेतबेले लागू हे पारे हंग असेंबली बोलियो कोन बुझी परला तो जदी कोन सी पार्टी पाखरे मेजॉरिटी नंबर ना ताल केही गवर्नमेंट फॉर्मेशन करि पर नांदी तो ओडा हमें कह झुली की रहउची सरकार केही तयारी करि पाउ okay when the party having a majority in the state assembly declines to form a ministry and the government and governor cannot find a coalition ministry commanding a majority in the assembly suppose आमी कहले कहा पाखरे मेजॉरिटी नहीं वर्तमान चांस दिया जिवो काहा को ना एडा हला बीजेपी बीजेडी कांग्रेस तो प्रथमे सपोज मैंने बीजेपी को चांस देले कि तमे करि परिबो कि गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट माने से यदि कहबे नहीं हमें कांग्रेस संगे मिसी गवर्नमेंट करबो कि और बीजेडी संगे मिसी की गवर्नमेंट करबो से यदि गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर देले तो भलो कथा गोटे हमरा असेंबली चलिबो जदि गवर्नमेंट फॉर्मेशन न करि परले ताहले हमरा प्रेसिडेंट रूल लागू हो तो तापरे तो जतबेले हमरा कोलिशन गवर्नमेंट माने कोन जानिछो जे जदी कोनसी पार्टी रा मेजॉरिटी नाही ताले गठबंधन सरकार हम जो कहछे समस्त मिसी के हमें कोन करबा गठबंधन सरकार जेंति इलेक्शन पूर्व हमें कहउतले जे गोटे कोलिशन फॉर्मेशन करी के हमरा सीट शेयरिंग बीजेडी भीतर हबो किंतु एडा हलानी तो सपोज हमरा इलेक्शन पारे हंग असेंबली होचे और बीजेडी मिसी की गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिया को पहुंचंदी तो सही केस रे हमें करि करे when a ministry resign after defeat of the assembly in the assembly and no other party is willing to form the ministry commanding a majority in the suppose हमारा जो पार्टी अच्छी से रिजाइन कर आउ को पार्टी बर्तमान गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर ताहले हमरा एटा कोन करियो एटा हंग असेंबली हे गेला ना नहीं ओके तो किछि हमरा तम गवर्नमेंट चली बर्तमान किसी एमएलए रिजाइन कर देले दैट मींस तमरो मेजॉरिटी नाही तो हमें कोन करिवो ना रिजाइन करिवो रिजाइन करले अन्य पार्टी जदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करि पर ना ताले हमरा असेंबली when where a constitutional direction of the central government is disregarded by the state government जदी सेंटर ओडे डायरेक्शन देछि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन देछि किंतु स्टेट ताको मानुनी
तो सेही केस रे हमर कोन होची ना तमरो लागू होई परिबो इंटरनल subversion where for example a government is deliberately acting against the constitution and the law, so formatting the violation a violent revolt तो सेही केस रे भी हमरो लागू कर physically breakdown where government is willful refuse to discharge its constitutional obligation endangering the security of the state. Suppose Manipur case रे तमरो और तमरो वेस्ट बंगाल रे हमर कि प्रेसिडेंट रूल लागू करिया पई जदी तमरो स्टेट रे एबे पूरा दंगा हला बळे होउची गवर्नमेंट किछि एक्शन होउनी आ इतरे हमर इन्वॉल्व हे कि रहउची सेही केस रे भी हमर कोन होउची ना तमरो प्रेसिडेंट रूल लागू के आ को केस रे लागू जदी तम प्रेसिडेंट करू रूल लगौ जडा ठीक नुहे ना where a ministry resign or dismiss on losing majority support in assembly and the governor recommend the imposition of the president rule without proving the possibility of forming an alternate ministry. धर हमें कहले गोटे मिनिस्ट्री हमरो रिजाइन कर दोची तमे संगे संगे प्रेसिडेंट रूल न लगे कि तमे आउ काहू चांस दब कि नहीं आउ की फॉर्मेशन करि परिबो कि तो सेईटा जदी जदी तो आउ जन चांस देलो सी जदी फॉर्मेशन करि पारनु तमे देखिलो जे वर्तमान कोनोसी पार्टी हमरो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करि परिबे नाही तापर प्रेसिडेंट रूल तमे लागू नहीं जणे संगे संगे रिड्यूस कला नंबर आउ तमे कोन अन्य माने को चांस न दे कि तमे प्रेसिडेंट रूल लागू कला when the governor make his own assessment on the support of the ministry in the assembly recommend the impose निजे निजे जदी विदाउट तमे भाबिला जे नहीं वर्तमान आंकर पाखे मेजॉरिटी नहीं ओके तमे निजे निजे भाबी कि तमे रिपोर्ट लिखि देला प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल पाई तो ठीक नहीं तेनु प्रथमे जमे को लागु जदी माने कर मेजॉरिटी नहीं तमे फ्लोर टेस्ट करिवो जे आंकर पाखे नंबर अछि ना नहीं दे हैव टू प्रूव जदी तम पाखे नंबर नहीं तमे देखि देला जे हमरा एमाने प्रूव करि पालेनी तापरे तमे देखिलो जे मेजॉरिटी माने का लॉस ताल तमे प्रेसिडेंट रूल पाई लागू करिवो तेनु मन इच्छा तमे जदी एमिति प्रेसिडेंट रूल लगेइबो ताहले हमर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू फ्लोरे सेटा को हमर कोन करिवो ना चेक करी कि इनवैलिड करे देबो internal disturbance not amounting the internal submersion and physical breakdown maladministration in the state or allegation of corruption against the ministry जदि को केस धर maladministration और corruption केस रे तमे इमरजेंसी लगे परिबो ना ओके त एई गुडा का हमर कोन होची ना को केस रे हमरा इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लागू ही परिबो नाही तो सेडा को मन रखिबो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें कहले फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 रे हमर प्रेसिडेंट जेतोला हमर देखिबे जे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज इन डेंजर हम देश रे वर्तमान फाइनेंशियल कंडीशन इज इन डेंजर तो सेही केस रे हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करि परिबे अंडर आर्टिकल 360 रे हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमर लागू करि परिबे जेते बेले हमें कहूचे कोन ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री होचे हमर सेटल ओके तो आप कौन पार्लियामेंटरी अप्रूवल दरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी पे ना विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू रे तमरो फाइनेंशियल इमरजेंसी टा हमर कोन ना पास होबा दरकार एंड तमरो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हमरो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हमरो एटा पास करबा दरकार जदि हमर लोकसभा डिजल्व हेछि नुवा लोकसभा आसिला परे हमर 30 डेज भितरे हमर पास करिया दरकार आउ एटा हमर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंटरी सिंपल मेजॉरिटी पास हो दरकार ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी passed by either house of the parliament only by a simple majority that is majority of the member present and voting तो एटा बोथ हाउस रे सिंपल मेजॉरिटी पास हो दरकार तेनु केवल स्पेशल मेजॉरिटी कोडा दरकार नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी भी बोथ हाउस रे सिंपल मेजॉरिटी एटा भी हमरा बोथ हाउस रे सिंपल मेजॉरिटी हमरा
तो गोटे थर अप्रूव होला परे फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडेफिनाइट till it is revoked. So there is no maximum period prescribed for its operation. Repeated parliamentary approval is not required. गोटे थर तमरो लागू कर देले लागू हे गला हम जेमति रिपीटेड हम कहजे प्रति 6 मंथ रे हमर एटा जो रिन्यूअल हवा कथा तो एई केस रे हमरो सेमति किछि नाही किंतु एतले रिमूव करिया को चाहूछ प्रेसिडेंट एनी टाइम रे हमर कोन करिवे रिमूव करि परिबे किंतु कोनोसी पार्लियामेंट रो अप्रूवल आर दरकार नाही ओके तो एई सब जिंस गुडा काम रहिला कोन ना ओडिशा रे 1961 रे 1971 रे 73 रे 76 रे 77 रे 80 ओके 6 थर किंतु ताठु भी अधिक हमरो 6 टाइम्स नुहे ताठु भी अधिक हमरो लागो ओके ओके तो हमर टोटल जो इमरजेंसी चैप्टर हमरो किछि आईडिया हला तेणु तुम परीक्षा रे कौन पड़ी 3-4 धाड़ी मन रखिबो ए चैप्टर रु गोटेला जे इमरजेंसी जो लागू होची तीनटा टाइप रे इमरजेंसी अछि गोटेला 352 जोटा नेशनल इमरजेंसी आउटेला 356 जोटा स्टेट इमरजेंसी 360 हला फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी पई कंडीशन कोन कोन रहिला हमर वार एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल आर्म रिपेलियर तापरे हमरो स्टेट इमरजेंसी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी हमरो ब्रेकडाउन होछ फाइनेंशियल इमरजेंसी भाई स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज इन थ्रेटेन तो नेक्स्ट आसार अप्रूवल पाई तो नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल पाई कोन दरकार बोथ हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट इमरजेंसी पाई सिंपल मेजॉरिटी फाइनेंशियल इमरजेंसी तार मैक्सिमम पीरियड केते हमें कहि परिबा नेशनल इमरजेंसी रो इंडेफिनाइटली पई लगा जिवो किंतु 1 ईयर एट ए टाइम तमे इंक्रीज करि चलिबो रिन्यूअल केते दिन रे हबा दरकार एवरी 6 मंथ भीतर हमर हबा दरकार हमर स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 इयर्स तो एट ए टाइम केते दिन जाय हमर चलिबो 6 मंथ रिन्यूअल हे हमर 3 मंथ जाय चले आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी रो इंडेफिनाइट तो गोटे थरा हमरो अप्रूवल जदी होउची कंटीन्यूअसली हमरो चलिबो रिमूवल करिया पई हमरो नेशनल इमरजेंसी रो कोन जो हमरो की रिमूवल करि परिबे प्रेसिडेंट करि परिबे काहर अप्रूवल दरकार सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा सिमिलरली हमरो स्टेट इमरजेंसी पई प्रेसिडेंट हमरो रिमूवल करि परिबे एनी टाइम विदाउट एनी अप्रूवल फाइनेंशियल इमरजेंसी भी सेम नेशनल इमरजेंसी बेले हमरो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए कि यस एक्सेप्ट हमर 2021 हमरो स्टेट इमरजेंसी बेले नो फाइनेंशियल इमरजेंसी बेले नो तापरे हमरो नेशनल इमरजेंसी बेले स्टेट रो असेंबली रहिबो ना रहिबो आउ स्टेट इमरजेंसी बेले रहिबो फाइनेंशियल इमरजेंसी बेले रहिबो ओके तो नेशनल इमरजेंसी बेले सेंटर स्टेट ऊपर लॉ करि परिबो ना नहीं करि परिबो कनकरेंट लिस्ट ऊपर हमरे कहले में करि परिबो स्टेट इमरजेंसी बेले पार्लियामेंट ही लॉ करिबो ओके फाइनेंशियल इमरजेंसी बेले तो एटा किसी अफेक्ट करूनी तो डायरेक्टली हमरे कोन करिवो स्टेट ही तार लॉ करिवो ओके एंड आ कोन रहिला एतिकी तो आ कोन रहिला एतिकी ओके हमें पढ़ी थिले स्टेट इमरजेंसी टा हमरो कित नंबर आर्टिकल ए जो हमें कहले एटा केते नंबर पार्ट रे अछि हमरो ओके 18 ना 20 ओके 18 रे अछि ओके 20 रे कोन अछि एंटी डिफेक्शन ओके
आमे से प्रेस जो इमरजेंसी रा क्वेश्चन करनथले ना करथिले करा है इमरजेंसी प्रोविजन टा हमर कोठो आसी छी जर्मनी मन रखियो इमरजेंसी प्रोविजन टा हमर जर्मनी रो सेटा कोई परीक्षा रे पडुची जर्मनी रो एटा गोटे क्वेश्चन पडितला तमरो इमरजेंसी जो which of the following rights cannot be suspended or restricted during national emergency 20 और 21 कहथिले right to life or personal liberty एटा हमरा बी हिजबो करेक्ट आंसर ओके सॉफ्टवेयर कोड
एटा क्वेश्चन कलो यूनियन पार्लियामेंट may legislate on any subject of the state list to implement international agreement by consent of the state when proclamation of emergency in operation in the national interest after a resolution passed by council of the state with 2/3 majority. को केस रे हमरो emergency लागू करी जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट रे लॉ करी परिबो सब गुडा का तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होची किंबा इमरजेंसी इश्यू होईची किंबा हमरो राज्यसभा ओडे स्पेशल मेजॉरिटी it was it. Under which article of the Constitution it is responsibility of the Indian government to protect the state from external aggression? 355. Okay. तापरे second question होची President may declare the national emergency if there is a threat to external aggression, internal disturbance, armed rebellion, communal classes. One and three ना वो केस रे हमर national emergency लागू है 1 and 3 external aggression आउ armed rebellion internal disturbance है बनी तो 1 and 3 हमर D है जो हमरा correct answer. Under Article 352 Constitution of India, an emergency can declare the security of any part of the India is threatened by 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. तो कौन परीक्षा रे पढुची तमे जस्ट not the basis of declare national emergency कोडा नुहे war, external attack, threat to internal peace, armed rebellion. Internal peace टा हमरा नुहे जोटा कि हमें कहले internal disturbance cannot internal disturbance. Okay, परीक्षा रे सेडा मन रखिबो. President can declare emergency on the basis of tinta. Okay, armed rebellion, external aggression. Okay. President can declare emergency को केस रे ना हमरो external aggression 3-4 एटा होचे हमरो national emergency एटा state emergency एटा financial emergency. एक क्वेश्चन देखो 352 रे एक्सटर्नल इमरजेंसी केस रे प्रेसिडेंट इश्यू करि परिबे हमर नेशनल इमरजेंसी यस इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट within 2 months. It should be approved by parliament with 1 month. It should be approved by parliament by simple majority तो नुह तमे जानि छ स्पेशल मेजॉरिटी हमर पास हो दरकार 2/3. Okay, and tomorrow it can be revoked by parliament in simple majority. It can be revoked by 2/3 नहीं एटा हमर 2 simple majority लोकसभा रे हमर पास हो दरकार. Okay, तो आंसर सी ही जाउची. Okay, under which article president can suspend the enforcement of the fundamental right except 2021 तमे 300 B 359. Okay, तो जो हमरा नेशनल इमरजेंसी केस रे हम जो फंडामेंटल राइट उडा को सस्पेंड करा होची 2021 को अंडर आर्टिकल 359 माने रखबोटा. ओके, सेम जिनसे कोडा सस्पेंड हेई पारे नाही तो तमरो 2021 सस्पेंड हुए नहीं
तो काहर एडवाइस रे प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुए हमर गवर्नर का रिपोर्ट रे गवर्नर ओडे रिपोर्ट देबे से रिपोर्ट अनुसार हमर प्रेसिडेंट रूल लागू हबो प्रेसिडेंट रूल तो तुम जानि छ केते ना हमर 356 2017 रे क्वेश्चन पडितला आईएएस रो which of the following are not necessarily the consequence of proclamation of the president rule in state यदि president rule लागू हेछि तर कोडा consequence नुहे resolution of the state legislative assembly अब कहीं कि ना तांकर मेजॉरिटी नाही बोली सिटी प्रेसिडेंट रूल लागू हेछि हां हां और डिजल भाव और तमरा जो सस्पेंड करी हबो तापरे रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडी रो हमरा इथरे डिजल्व हुए ओके तो एठी जो डिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली आइदर एटा से डिजल्व करि परिबे और सस्पेंड करि परिबे ओके तो सही केस रे हमर कोन होछि ना कोडा ठीक नुहे तमर लोकल बॉडी तो तमर एथरे किछि अफेक्ट होएनी से नॉट नेसेसरीली पचरि छी तो एटा तो हमर होएनी एंड एटा तमर रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटा तो डेफिनेटली वे टू जोथरे अछि काटि दियो आंसर तमर बात कारण से गवर्नमेंट ही नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भांगी दिबो तो रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट तो सेटा जदी आंसर तुम रिमूव करबा आंसर पाइ जबो तुमको फास्ट मे बी कंफ्यूजन लागिवो किंतु तमे देखिबो जे एलिमिनेशन मेथड पके कि देखिबो जे कोडा हमर डेफिनेटली रॉन्ग तो तापर तुमर आंसर बाहर जबो एई केस रे कोन हुए ना विधानसभा आइदर डिजॉल्व करिवे किंबा सस्पेंड भी हमर करि परिबे 2018 भी गोटे क्वेश्चन पड़ितला तो स्टेट रो जो सब्जेक्ट उपरे की हमर लॉ करिवो पार्लियामेंट लॉ सो पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो पूरा स्टेट उप पई लॉ की तैयारी करिवो पार्लियामेंट हमर लॉ तैयारी 21 नंबर देखो फास्ट होची फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी ठीक अछि तो एडा हमर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करि परिबो एडा भी ठीक अछि यदि मालाफाइड इंटेंशन किंबा इंटेंशनली सेटा को करा जाय छि सेटा को रिव्यू करि परिबो along with this proclamation हमरो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिजॉल्व सस्पेंड हे पारे किंबा डिजॉल्व करि पारंती ओके तो हे पारे न हे भी पारे this proclamation has to be approved by each house of the parliament within 2 months भितरे simple majority रे हमरो पास हो टाइम लिमिट फॉर रैटिफिकेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट केते हमरो नेशनल इमरजेंसी रैटिफिकेशन ऑफ एन इमरजेंसी लिखाइ छै नेशनल इमरजेंसी टा 1 मंथ आउ आरो दीटा का हमरो 2 मंथ्स लगे एटा नेशनल इमरजेंसी टा छाडी दे ओके दी 2007 रे गोटे क्वेश्चन पड़ितला 25 नंबर consider the following statement in respect to financial emergency under article 360 of the Indian constitution तो केते बेले हमरा फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू है ए प्रोक्लेमेशन
shall be ceased to operate after expiration of the 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both house of the parliament. दिमास भितर एटा हमर कोन होछि ना पास हो दरकार नहला एक्सपायर कर जिवो एंड सिंपल मेजॉरिटी हमर लोकसभा और राज्यसभा एटा हमर पास हो दरकार. If any proclamation of financial emergency is in operation, it is contempt of the President of India to issue direction for reduction of salary allowance of all or any class person serving in connection with. तो एटा किछि लिखा जाय जे सैलरी टा कट हबो कोन हबो एटा हमर लिखा जाय. ता भीतर को इमरजेंसी टा एपर्यंत लागू हेई को इमरजेंसी लागू हेनी 360 हमर एपर्यंत लागू हेनी. तो 360 एपर्यंत लागू हेनी. हाउ मेनी टाइम्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर एटा केबे लागू एपर्यंत हेनी. तो तीनटा इमरजेंसी हमर रहला एटा तो तमे जानिछ. तो नेशनल इमरजेंसी बेले लोकसभा टेन्यूर केते बढ़ई परिबो. ओके एनी नंबर ऑफ टाइम दे बढ़ई परिबो किंतु वर्षे करी केते थर तमे बढ़ई परिबो. कैन एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी जो पर्यंत अछि तमे वर्षे करी की बढ़ई परिबो. प्रेसिडेंट रूल टा हमर मैक्सिमम केते वर्ष जाय रही परिबो 3 वर्ष हम कहले समाज करी की तमे 3 वर्ष पर्यंत हमर करी परिबो. नहीं सी कहि जे एक्सक्लूडिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जदि कमिबो समस्तंगर कमिबो. हां समस्तंगर जदि कमिबो समस्तंगर कमिबो. बहिरे अछि पॉइंट ना नहीं एटा अछि इंक्लूडिंग माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जज. हां एटा हमर कोन हबो. तो टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. पार्लियामेंट हमर एटा फर्स्ट टाइम हमर कोठी लागू हेतला. ओके ओके एतिके हमर इमरजेंसी रा क्वेश्चन जोडा थिला. तेनु केतरा पॉइंट तमे से जो हमें पॉइंट उडा डिस्कशन करले सेतिकी ही मने रखिबो टोटल. ओके परीक्षा रे जो पढुची जे तार टेन्यूर कार केते रहउची एंड एथिरे को कंडीशन में हमर लागू होची. तो ए तीनटा का इंपोर्टेंट हमर परीक्षा रे आरे भितर जहा भी पढुची सेतिकी रे पढु. ओके सो नेशनल जो हमारा इमरजेंसी चैप्टर ओवर. ओके सो नेक्स्ट हमें कौन हमर रहिला आ देखि दबा ओटे फाइनल कोन आ चैप्टर पढिबार अछि. देखि दोछि से चैप्टर गुडा का हमें फाइनली ठीक मारिबा ए गुडा को पढिबा. ओके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एटा पूरा हिस्ट्री हमें पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जोडा पढिचे. ओके सैलिएंट फीचर प्रिएम्बल पढिचे. सिटीजन गोटे पढिया फंडामेंटल राइट पढि देइचे जो जोडा पढिचे ठीक मारि दोछि. ओके फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर एटा का हमरो पढा हेछि. ओके प्रिएम्बल एटा हमरो पढा जाइछि. ओके आउ कोन रहिला हमें देखि दबा. ओके सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फेडरल सेंटर स्टेट रिलेशन पढिबा इंटर स्टेट पढिबा इमरजेंसी एटा पढा हेनी हला. एटा पढा हेछि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटा पढा जाइछि हमरो. पार्लियामेंट गला पार्लियामेंटरी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर
चीफ मिनिस्टर ये सब जिन पढ़ीचे म्युनिसिपालिटीज अच्छी पढ़ीने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सब गुड़ाक पढ़ी देचे ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा पढ़ीने ओके जोड़ा हूँ मेन टॉपिक इलेक्शन प्रेशर ग्रुप ये सब गुड़ा मेन टॉपिक तो आम कौन कौन आउ पढ़ा मुझे तुमको कहूँ जोटा कि यही जो छोट छोट चैप्टर गुड़ाक अच्छी ह्यूमन राइट कमिशन यही तक आम पढ़ा ओके तापरे म्युनिसिपालिटीज नेक्स्ट क्लास में म्युनिसिपालिटीज पढ़ा एटा सरिले तो लोकल गवर्नमेंट सरीगला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर चीफ मिनिस्टर गवर्नर ये सब सड़ी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट एटा गला पार्लियामेंटरी कमिटी तापरे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सरला इंटरस्टेट रिलेशन आउ गोटे फास्ट चैप्टर टा जो अच्छी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चारिटा पांचटा चैप्टर आप पढ़ो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मेन टॉपिक तो फिर भी हमें पढ़ी दबा जे को केस रे हमरो आसीबो ओके तो चारि पांचटा चैप्टर हमें टोटल पढ़िबा सो दैट ओवरऑल तमे तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब गुडा करो तमे निजे जानि परिबो जे कोडा इंपोर्टेंट टॉपिक रो क्वेश्चन हम जति कि करले तारि भितर ही मैक्सिमम क्वेश्चन हमर प्रीलिम रो आसे तो सेति कि कर देले तमरा ओके सो ठीक अछि कार कोन डाउट अछि हो कोडा कोडा डिजल माने हमें भांगी दबा माने जते बेले हमर 5 वर्ष होउची तो सेटा को डिजल करके आउटे हमर नुवा गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर दो तो डिजोल्यूशन माने ताको भांगी दबा ओके सो इवनिंग टाइम रे करंट अफेयर्स रो क्लास हबो सो एवरीवन शुड बी देयर तो जो जो करंट अफेयर्स होउची जति कि भी हमें करूचे इंपोर्टेंट वर्ष जाकर हमें कवर करबा केते बडे क्लास हेलानी तार रिकॉर्डिंग अच्छी देखि दियो जो माने देखिनो एंड जो माने तुमको स्लाइड भी दउची मु जोडा को करंट अफेयर क्लास होउची एंड सेही थिरे ही से स्लाइड रे ऐड करि करि चली लास्ट को जेतले रिवीजन करबो कोटे से स्लाइड टा केवल ही रिवीजन करबो ओके तो सेति के रिवीजन करि के तुम एंड फाइनली हमें सब वर्ष पाखबा कि करंट अफेयर्स पई 500 क्वेश्चन दउ 11 ताको ही पढ़ के जानते आ मैक्सिमम जति करंट अफेयर्स क्वेश्चन तार भीतर ही आस ओके तो सबु टेस्ट रु बाछि बाछि का जो करंट अफेयर्स फाइनली हमें कंपाइलेशन करके दबो एति करंट अफेयर्स हमरो जस्ट तमे सेही डॉक्यूमेंट आ गोटे थर तमरो पढ़िबार अछि ओके तो क्लास सबुडा करि दै था फाइनली से डॉक्यूमेंट तमे पढ़ला बेले को तुमको इजी ओके ठीक अछि थैंक यू